दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी कामधेनुर्वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णभक्ति प्रदे देवी सन्तभक्तये नमो भक्ताविहीनापराधभक्षैक्षिप्तस्य कामाभितरङ्गमध्ये कृपामयित्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद करूँ नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीवामन कृष्ण महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण कृष्ण महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज त्रिविक्रम एवं उपस्थित प्रबुद्ध चरण सुभाग I offer my respectful to my spiritual master Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj and Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and also assembled Vaishnavas Srila Ramchandra Prabhuji and Sripad Muni Maharaj and our Sant Maharaj. To all the devotees, I offer my respectful obeisance unto the lotus feet. So after many days, I met you in Delhi, maybe after 6 months. जैसे कि लोग प्रभु की इच्छा से सब कुछ है, क्योंकि राइट में संवाद में कहा है दुख मुक्ति कौन दुख होई बिलता। Jai Ramanand Samvad, it is mentioned what is the most sorrow in Jai Ramanand Samvad. So it is said Vaishnavas separation is the most painful thing in this world. So So how the bhakti will get condensed more? Maharaj is speaking on this. In the third canto of Srimad Bhagavatam it is mentioned, Bhagavan Kapil Dev is telling to his mother, so Gurudev says, in the Shastras, whatever the instructions are given, this is for us, for me. So in this way, Lord Kapil Dev, he is giving instruction to his mother Devahuti about all sadhak and sadhika. He is giving siksha. Always staying in the association of devotees and hearing Harikatha. Harikatha is very powerful. There is no differentiate between the holy name and glories of the Lord. Harikatha is the topmost. Although there is no difference between the name, form and Harikatha of the Lord, still our Acharya Path says which is the topmost and powerful Harikatha of the Lord, by which hearing we can obtain in our heart the desire to the Bhagavad Prem, and we can destroy all our lust, everything. Like how the sunlight entering into the house, all the darkness is destroyed.
क्या चाहिए? So, to chase away this darkness, we should open the doors so that sunlight will enter inside सूर्य की and the किरण और darkness will be प्रकाश आने के साथ destroyed. ही साथ वो अंधकार अपने आप ही चला जाएगा। है? ठीक उसी प्रकार So, भगवान की in this way, सर्व कथा तो है, ब्रजवती है, किंतु कौन सा कथा ऐसी all the विशेष stories है of Bhagavad Katha is जिस कथा को powerful, श्रवण करने से but which is that special हमारे हृदय Harikatha अति which शीघ्र by ही hearing निर्मल हो very जाएगा। fast our heart will become purified इसलिए and इसी कथा को we वर्णन can करके कहते obtain the हैं Krishna हमारी Prem. रासलीला कथा। So that is Ras Leela Katha, which is the powerful. इसलिए रासलीला कथा की अंतिम में श्लोक So में in the सबसे Ras बड़ी Leela प्रसिद्ध बात Katha, है क्या? last shloka Shukdev Goswami Pad says, इदं च विष्णु Vikrito श्रद्धान्वितो Brajavadu Idam Cha Vishnum. भक्तिं परां भगवती प्रतिरूपकामो विद्रोह आशु अभिनति अचिरेयति। जो धीर व्यक्ति है, A strong man or an intelligent person, वो क्या करता है? what he will do? इसी कथा को भगवान की सर्वोत्तम कथा क्या है? ये रासलीला कथा को This story, Lord's topmost Harikatha, Ras Leela, you will always hear this. ये क्या श्लोक होता है? ब्रजवधू विकृतं ब्रजवधू इदं च विष्णु ब्रजवधुओं के साथ अर्थात गोपियों के साथ Along with the gopis, कृष्ण के साथ जो प्रेम विलास प्रेम the विलास Prem Vilas with Krishna एकांत स्थान पर in Ekantastan, individual lonely place वृंदावन में in यमुना Vrindavan, के तट पर on the banks of Yamuna, शिव के पीछे near the Vamshivat, वो जो रासलीला कथा हुई that Ras Leela Katha which happened, ब्रजवती बने अत्यंत शक्तिशाली कथा है। that story is very powerful. विष्णु यही विष्णु श्रद्धान्वित हो कैसे श्रवण करना चाहिए? The same Vishnu, Shraddhanvito. So we should hear this Harikatha of Ras Leela with और great कैसे श्रवण करना है? faith किससे श्रवण करना है? जैसे तैसे व्यक्ति से नहीं। and with whom we should listen this Harikatha. We should not listen this Harikatha from any person. No. डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Like if you are fallen sick, you should go to a specialist, doctor to get cured. हिंदी की बात है। और वो तुम्हारी जो है इस सारे कुछ देख करके तो वो दवाई देंगे। ठीक उसी प्रकार कहते हैं So in this way, कि देखो ये बीरजवती कथा जो भगवान की सर्वोत्तम जो लीला कथा है ये रासलीला की this Viryavat, the topmost powerful Harikatha, is Ras Leela. अनुभव पर है। So by bhajan, वहां से Anubhut Parayan, one who is experienced in his bhajan, one who is having so much Anubhuti. Anubhuti means अनुसंधान his own progress. And अनुसंधान listen this Harikatha from Guru Mukhat, Anushilat, one who is practicing it. फिर पुनः कीर्तन करो। After hearing from Guru Mukha, from the lotus mouth of spiritual master, you should do kirtan. Then what will happen? First, in your heart, the Braj Prema Bhakti will manifest. And next, all the impurities from the heart will get destroyed. सबसे संसार में सबसे बड़ी कठिन रोग क्या है? In the material world, what is the toughest thing? That is lust. Lust will not go so easily. क्या काम दूर हो जाएगा? Your hair will become white, but your lust will never become leave you and go out. करने के उपाय क्या है? सबसे बड़ी और शक्तिमान मेडिसिन क्या है? ये भगवान की कथा। So, रास what is the most powerful tool to get rid of this lust? That is Lord's Harikatha, especially the Ras Leela Katha. आचरण अति आपके सारे काम क्रोध आदि दूर। क्योंकि इसमें कंडीशन ध्यान में तो अत्यंत Shraddhanvito. But what is the condition for this? With the topmost faith. दिल श्रद्धा अत्यंत की श्रद्धा साधारण श्रद्धा से नहीं अत्यंत की श्रद्धा जैसे
with the topmost faith. नाम कर रहे हैं हमारी भक्ति में Like how Haridas Thakur is doing the Naam. Our Bhaktivinoda Thakur is mentioning this. भाई यदि देह प्राण तथापि बदने नाक्षणिक परिणाम हैं What Bhaktivinoda Thakur is telling? दास ठाकुर के वो मुसलमान ने क्या किया पिटाई करने लगे कितने बाजार में So, एक बाजार in the Bais Bazaar, in the 22 markets, पिटाई करने they were beaten up Haridas Thakur, black and blue. अल्लाह नाम जप करो तो दास ठाकुर क्या बोला Haridas Thakur telling, they are telling to Haridas Thakur, why you are chanting these Hindu names? You chant the Muslim names of the Lord. So Haridas Thakur is telling, Allah and Krishna both are one. ये तो हृदय ठाकुर कहते हैं So Haridas Thakur said, ये खंड खंड है यदि देह प्राण यदि आप लोग मुझे if you people cut me into pieces, किंतु तथापि मैं still I will not give up this Harinam. That was the faith Haridas Thakur had, and he showed it in his life. दीक्षा मंत्र गुरु से ले लेते हैं तब इस पर क्या हो जाते हैं अंतर ध्यान हो जाते हैं गुरु अंतर ध्यान नहीं होते हैं और शिष्य क्या हो जाता है अंतर ध्यान हो जाता है Nowadays people take Harinam Diksha and they disappear immediately. शिष्य पहले अंतर ध्यान हो This is not faith. फिर दूसरी चलते हैं तीसरी चलते हैं जीवन कैसे इससे नहीं होता और एकांतिक की निष्ठा Ekantiki Nishtha, one-pointed faith. जिसमें से इसलिए श्रद्धा उसी प्रकार है कैसे आत्मत की श्रद्धा जैसे इसलिए कहा था So Shraddha is also is such a kind Atyantik Shraddha, Atyantiki Shraddha. It means जो श्रद्धा कभी टूटेगा which is not abstracted, always continuous. So we say, do not leave, just join. तो उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए So to obtain this love, you should hear these kinds of katha. Especially today Ramchandra Prabhu spoke very beautiful Hari Katha नारद व्यास about the Narad and Vyas Samvad. व्यासदेव की चित्त जो भ्रमित होने लगे When Vyasdev was worried, नारद ऋषि so that time Narad Rishi comes and clears all the worries and doubts and speaks about all the tattvas. Especially Narad Rishi says that you whatever the books you have published, whatever manifested scriptures, in that you have mentioned you have not mentioned the four things very clearly, but you have not written it very properly. है कि नहीं भ्रमित हो जाए जब भगवान So people will get bewildered. Who is the Lord? भगवान किसको कहा जाता है शिव पुराण पढ़ो आप लोग के शिवजी भगवान In the Shiv Purana it is mentioned Lord Shiva is the Bhagwan, Supreme Personality. If you read Vishnu, you see Vishnu is the Supreme Person. If you see Brahma Virta Puran, you see Brahma is the Supreme Person. Especially these three, Brahma, Vishnu and Shiv. भगवान लगे ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो आपको लगेगा ब्रह्मा जी भगवान शिव पुराण पढ़ो शिव जी से भगवान देवी पुराण पढ़े If you read Devi Puran, देवी सदस्य the goddesses will be the Supreme Personality of Godhead. मत में काल दशहरा किंतु स्मार्ट विधान में आज बहुत लोग दशहरा मनाए किंतु वास्तव विचार में ये काल ही काल दशहरा तो हम जिस कथन बताते जा रहे हैं वैष्णववादी समूह कितना ये होता है इसलिए कहते हैं अपने जो ग्रंथ आदि रचना किया इससे सबको लोग भ्रमित होते जा रहे हैं त्रिदेवता के बारे में जो आपने लिखा ब्रह्मा विष्णु शिव इसमें श्रेष्ठ कौन है इसके विशेष करके दिखाइएगा तो उन्होंने क्या लिखा कृष्णस्तु भगवान स्वयं अच्छा कृष्ण भगवान स्वयं है इसके प्रमाण कैसे करोगे केवल बोलने में नहीं होगा उपाख्यान के द्वारा साधारण लोगों को समझाने के लिए क्या चाहिए प्रमाण और केवल प्रमाण So in the scriptures it says Krishnastu Bhagavan Swayam. So Narad Muni is telling to Vyasdev that you write this Krishnastu Swayam Bhagavan उन्हें ये कर दिया and you give evidence for this. कौन सा देखिए अरे जो गए लात मारा
भागवत में स्पष्टीकरण किया। In the Bhagavatam, it is also mentioned about the Bhrigu Rishi. एक समय समस्त ऋषि लोग One time, all the rishis, after reading the scriptures, after finishing their duties, विचार विमर्श करने they were talking and discussing ये भगवान कौन है, who is the Supreme Personality of Godhead. त्रिदेवता कहा गया। So they finally concluded with three gods, ब्रह्मा विष्णु शिव Brahma, Vishnu, and Shiva. And who is the topmost among these three? चिंतन करने लगे। All the sages were thinking and discussing about this. इतने समय उस सभा में So at that time, in that Sabha, in that assembly, Bhrigu Rishi came and said, Hey Rishivar, you do not worry, I will give the evidence. भृगु ऋषि चले गए ब्रह्मा Bhrigu Rishi went to Brahma लोक में गए। in Satyalok. ब्रह्मा जी विराजमान थे Brahma ji was in his seat. और उनके ना प्रणाम किया ना कुछ So एटिकेट होता है। he did pranam for Brahma ji, but Brahma did not said anything. खड़े होकर उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे वाह, तुम मेरा पुत्र हो। Sorry. So Brahma did pranam for the sage, सम्मान देना नहीं जानते हो। and the Bhrigu Rishi did not paid pranam in return. So Brahma became angry and said, You fool, you don't know how to behave with your father. He became very angry. इसमें रजगुण है। So Bhrigu Rishi left immediately and he said, No, Brahma cannot be the Bhagavan because he has Rajva Gun. Means I am the doer. I am the doer. फिर शिव लोक में गए। Again he went to Shivalok, Lord Shiva. He standed in front of Lord Shiva. ना कुछ किया Shiva did not welcome him, greeted him, और or hospitality was not there. अरे तू मेरा छोटे भाई हो। So Bhrigu Rishi did not paid any respect for Shiva, did not hospitalized him or anything. और उस समय शिव जी Hospitality was not there. So Lord Shiva became very angry and he took his trident and he was ready to kill Bhrigu Rishi. छोड़ दिया। Then Bhrigu Rishi left that place and he also concluded that Shiva is also not the Supreme Personality of Godhead तमोगुण है। because he has more Tamagun. करता है। The destroying nature is having only with Tamagun. घर में कभी क्या होता है, टीवी को भी आप तोड़ देते हो, ग्लास के तोड़ देते हो, हैं? क्यों? क्रोध से। लड़ाई में घर में झड़ाई लग, क्या बोले, लड़ाई झगड़ा होती है कभी? नहीं होती है आपकी वजह से, हैं? झगड़ा होते हैं कि नहीं होते, हैं? अरे हर रोज होता है, महाभारत कभी नहीं हो गया, हैं? एक लड़की को देखने के लिए आई, उसके माँ बोली देखो। So Maharaj is telling in our house also we get influenced by this Tamagun. Like how we fight in the house, we break the TV remotes. फिर हमारे बेटा के साथ विवाह करो, नहीं तो आगे जाकर के सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा बताओ, बोले देखो हमारे घर में जो है हम लोग सब विश्वास, हम लोग सब भक्त हैं, भक्त हैं। So हमारे घर में नानी कितने a person came to another person's house for getting married. So the family said, You girl, you will come to my house and before marrying to my son, you know our customs and tradition. So she was telling, we are all devotees. We get up early in the morning, we take bath and we do bhajan, we do kirtan, we do mangalarti, and then later we do stutis. After that we do some reading of some books, Ramayana, Mahabharata and all. ये तुम्हारे करने की मंजूर है कि नहीं? बोले So they were asking, now tell me, do you agree? कर लूंगी। बोले कौन सा? महाभारत। So she said, do you agree to marry my husband, my son? Because we are scheduled like this. So that lady telling, yeah, I am also reading one book. What is that book? Mahabharat. Mahabharat means always fighting. वो करे तो हमारे बेटा के स्कूल को आप भेजे और कब हैं? ऐसे नहीं करते। आजकल लोग बहुत देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। So nowadays many people worship this Deva Devati Puja जैसे उचित होता है उन्हें पर and they worship. इसको छोड़ना नहीं पर सबके छोड़ देगा। हमें ठीक है, बाकी एक श्लोक के नाम लोग बरी रे व सदा रंग सर्वदेवी सरीश्वर इतो रे ब्रह्म रुद्राब्दा नामक गया राज। ये शास्त्र भजन में लिखा है, गुरुदेव की श्लोक है, पढ़ो अच्छी तरह से।
हरि के सर्वेश्वर अपने स्थान पर रखो, ऊंची स्थान पर रखो, और सिर्फ सब देव दिन तक आप छोड़ नहीं पाओगे। मैं तो छोड़ो नहीं, क्या करना है, जोड़ो। तो इस श्लोक में भी जोड़ते जा रहे कि ये हमारे श्लोक नहीं है। हरि रेव सदा रक्त सर्व देवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रात्ता नामज्ञ बता। कोई देव देवी का होगा मत करो, ठीक है, आप जो करना करते हो। So Maharaj is telling that you should never defame any demigods. Say that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. न बुद्धि भेदम, जो कनिष्ठ अधिकारी की बुद्धि के भेद मत करो, जो करने दो उसको उत्साह दो। चलो आगे की कथा सुना दो। भृगु ऋषि ने क्या कहा? So again Bhrigu Rishi, he concluded that Lord Shiva is not the Supreme Personality of Godhead because Tamagun is present in him. अच्छा, उस स्थान को छोड़ करके He left that place वैकुंठ में चले गए। and went to Vaikuntha. उस समय क्या थे? The Lord at that time, what he was doing, he was taking rest अपने शेष सज्जा में पास लेटे हुए थे, in his और लक्ष्मी देवी उनके क्या कर रही थी? Ananta Shesh, शरण। and Lakshmi Devi was pressing the leg. शिव जी, ये भृगु ऋषि ने क्या की? दबदबा खटखटाया। देखो So किसी में Bhrigu Rishi दबदबा इसमें knocked at the door. प्रवेश करो, एक नियम होता है, क्या होता है? दबदबा खटखटाया आने की अनुमति मांगते हैं। मंदिर में भी ऐसे नियम होता है। मंदिर में क्या होता है? जितने बड़े-बड़े मंदिर के बाहर क्या होता है? Ganti. घंटी लगा रहता है। घंटी बजा करके तब So in the temple also there is this kind of rule. First you should ring the bell and then go inside the temple. In all the temple there is a bell. ये कथा सुनते हैं? ठाकुर जी घंटी बजा, जगन्नाथ देव जाकर के बैठ गए। चोरी किया तो कुछ वो कथा का हम श्रवण करा। बहुत कथा नहीं पता। तो इससे मंदिर में क्या होना चाहिए? घंटी बजा। ठाकुर जी तो जब पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, कम से कम तो घंटी भी नहीं रहे, कम से कम If there is no bell, at least they have to clap before entering into the Lord's altar. भाई ये नियम होता है। इसे कहा जाता है क्या? एटिकेट कहा जाता है। So this is a etiquette, sadachar. किसी घर में घुस जाओ, It's not like that you enter someone's house without knocking the door or something. No. तो देखो हमारे उन्होंने क्या की? भृगु ऋषि घंटी बजा So कुछ नहीं। Bhrigu Rishi, when he went to the Vaikuntha, he did not knock the door, he did not ring the bell. He just went directly inside अब देख करके आ गए। to Vaikuntha. और जमाना और जाकर क्या की? विष्णु के चरण में इतने जोर से नाच जमाए। So he just kicked the chest of Lord Vishnu's भगवान विष्णु का ऐसे अड्डमुट्ठी and करा था। अड्डमुट्ठी हो जाए, आधा हाँ खुले हुए खुला हुआ, आधा बंद हो। और जब इतने जोर से मारा, और भी मारा सामने किसके? अपने लक्ष्मी के सामने। in front of Lakshmi, he kicked Lord Vishnu's chest. आपके घर में जाओ ना, अच्छी तरह से इसके सबके सिखाइए, सबक सिखाइए, है कि नहीं है भाई? हाँ भाई, किसी के कहो, किसी के पत्नी के सामने, पति के भाई उसके कुछ बोलो मत, बोलो वृंदावन बिहारी। लाल की जय. अच्छा देखो, इतने जोर से लगा, और विष्णु जी ऐसे चौंक उठे, So Lord Vishnu wake up और देखो भगवान विष्णु कितने, और उनके चरण पे पकड़ लिया। and Lord Vishnu immediately catch the lotus feet of Bhrigu Rishi and said, "Oh Bhrigu, such a hard pain your lotus feet would have been happened. My heart is like, my chest is like a stone." So Lord is showing his Tranadapi Sunichena. Lord is telling to Bhrigu, my chest is like a stone and your lotus feet is like a soft. Definitely your leg would have been pain. So I will do some massage for your leg. इस कथा को सुन करके By hearing this katha, Bhrigu Rishi समाज में संत महात्मा concluded के प्रचार in front of the assembly of all the sages that the Supreme Personality of Godhead is Lord Vishnu. Shivji is not Supreme Personality of Godhead because he has Tamagun. ब्रह्मा जी Brahmaji, he has Rajogun. और भगवान क्या है? And Lord Vishnu, Bhagavan is Gunati Purusha Prakriti Paraha. भगवान सत्तर तमोगुण के अतीत। The Lord is beyond this Rajogun and Sattvagun and Tamagun. देख समझ लो, इस स्पष्टीकरण कर दी।
So this has been Spashtikaran. Spashtikaran means clearly evidenced. So in Bhagavatam, if you written Krishnastu Bhagavan Swayam, no. We should give evidence for this. So we should do vichar for this. Vichar means we should think. देखो मैंने लाख माना आज तक भी भगवान की वक्षस्थल पर क्या भृगु लांछित Srivatsa. So till today, the Lord's chest, there is a mark that is called Bhrigu Lanchita Srivatsa Chinha. एक चरण के दिखाओ और एक वक्षस्थल के ऊपर करके दिखाओ, हाँ बात तो सत्य है कि नहीं? भृगु लांछित चिन्ह होगा, उसमें लक्ष्मी के चिन्ह रहता है, वो स्वर्णरेखा के भांति और दक्षिण रोमावली जिसका भृगु लांछित चिन्ह होता है, तब तो भगवान माने जाते, जिसको दस के भगवान को निकाल देते। आज तक भी सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जो भगवान होते हैं उसका श्रीवत्स लांछित चिन्ह रहता है। So the Lord has this sign, Srivatsa Lanchita Chinha. फिर अंत में भगवान ने अच्छा ठीक है, मैं तो गोपी रास्ते में तुम्हारे प्रवेश निकाल दी, चलो तुमको मैं क्या करता हूँ अपने वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के भांति शिकार करता। इसलिए जो भगवान So since Lakshmi Devi did not had adhikar in the Rasotsav, he gave benediction to Lakshmi that I will make a mark in a golden so that your remembrance will always be there. So he made a mark in a golden and Lakshmi always reside in the heart. So Krishnastu Bhagavan Swayam, this is evidenced. Whatever you say, it has to be evidenced. Then only people accept it. So Narad Muni is telling to Vyasdev, all these things you should do Spashtikaran, you should give evidence. And then whatever the Krishna Lila you have mentioned, you have not mentioned it properly. Krishna's Vrindavan Lila, Mathura's Lila and Dwaraka Lila, you should maintain this in sequence. In any Puranas, if you read, you will not come to know which is the first and which is the second. It is not in the sequence. Like in Garga Samhita, in many Puranas, you cannot understand. Brahmavarta Puran, many stories are there, but they are not in the sequence. In Srimad Bhagavatam, apart from Srimad Bhagavatam, in all the scriptures you will get very beautiful stories to make understand with the people. So, how you should know this? In the Srimad Bhagavatam, you should write all these things in the sequence, like how Krishna took birth as a small boy. So the birth and the duties of Lord Krishna is transcendental. So all these things has to be mentioned. The Lord is doing the pastime like a humans. So this Janam Leela, the birth Leela of Lord Krishna, birth pastime of Lord Krishna is not there in the transcendental world. But in this material world, this particular Leela is there. So please write and evidence it. In the transcendental world, it is only bhav. Now we are telling, I am also not understanding and you will also not understand. That is only bhav. It is present in the bhav. When you go to the transcendental world, then only you can understand. This I am not telling. Jiva Goswami Pad himself is telling these things. So these many leelas, Nitya Leela, Naimitik Leela, all these things, bhav, Naimitik Leela. These are Naimitik Leela. So these things you cannot understand here. When you go to transcendental world, then only you can understand all these things.
पूर्ण हो जाएगा। इसलिए भगवान को लीला आदि है, किंतु वो लीला क्या है? भाव मात्र। हजार बार कहने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, और हजार बार कह कर तो मेरे भी समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूँ। इसलिए जिस को सही बात देख रहे हैं, जब उच्च कोटि के साधक भाव रहते हैं, So Jiva Goswami Pad is telling the Uchakoti sadhak who have the bhav, even they cannot enter this, understand this, because somewhere there will be the influence of Maya. But when they go to the transcendental world, then they can understand. इसको आप समझिए। तो उसी प्रकार कहने लगे सब मिला स्पष्टीकरण करो, ये कैसे कृष्ण माँ जसोदा के गर्भ से प्राकृत शिशु के भांति जन्म लिया, जिसमें नाड़ी छेदन आदि है, अनेक प्रकार लौकिक क्रिया आदि है। ये सब स्पष्टीकरण करो। So Narad Rishi is telling to Vyasadeva that you should evidence all these things and you should write it in a sequence, like how Krishna took birth, then his Jata Samskar, his childhood Leela, Gocharan Leela, Ras Leela, all these things please write in the sequence so that people can understand. Because Krishna's Ras Leela is the topmost Leela. जिस राजा के वर्णन करते हुए परीक्षित शिवजी देवकिया पर परीक्षित देवी सुखदेव गोस्वामी तो भाव में अभिष्ट हो गए, बोलते जा रहे, और उसी कथा के बीच में परीक्षित महाराज ने प्रश्न छोड़ दिया, परदार जगपति की अभिप्राय। अरे स्वयं भगवान जगत में आते हैं वर्णाश्रम धर्म के पालन करने के लिए, असुरों के विनाश करने के लिए, और परदार अभिमर्शनम दूसरे स्त्रियों के साथ, अविवाहित गोपियों के साथ रासलीला आदि का ये कथा आपने सुना है कि अभिप्राय, इससे जगत के कल्याण क्या होगा, और इससे सुनने वाले के आगे की क्या है। So in the Raslila also you can see that Krishna is associating with many kinds of women who is married and they are leaving their family and they are coming to meet with Krishna and they are kissing each other, so many things. So there will be a question that why Krishna is doing like this. So Narad Muni is telling that you should justify all these things with the proper evidence. So Prabhupada tells one story. So one time in an assembly there was a scholar. उसमें जो सभापति थे बोले एक वक्ता अच्छा बोले, किंतु अपने वक्तव्य को जो है समाप्त नहीं किया, मन जो बोलना चाहते थे। So there was a scholar, he was given a 10 minutes time to present his views on philosophy. So in the 10 minutes he could not able to present. So there was a judge for that and he was telling that this person gave nice harikatha but he could not able to establish his views on the philosophy. So the scholar says, oh sir, this is not my fault. This, as per your time I could able to do this much only. If I had given more time I could have established my philosophy properly. So one example is also given that one king. So he was telling, you please paint this wall. The king said, please paint this wall. And he said, when the evening become, you just stop this and do it the next day. So when he was doing, he was writing a painting called please urinate, like something like please do not urinate here. So he was painting like please do urinate here, but he was not mentioned not. So next day he was supposed to write that and it was supposed to time and he left that. So it was like please do urinate here. So he did not mention not there. It was supposed to be please do not. So
Second day, many people came. Many people came there and did the urination there. So Prabhupada used to say this story. The speaker should always justify his speech. So Narad Rishi also said to Vyasdev in the same way. In Bhagavatam you mention all these things. You give evidence and in a perfect sequence. So the four Leelas of Vrindavan, Balya, Pauganda, Kishore and Komar. Bal Leela. First is Bal Leela, next is Pauganda Leela, next is Kishore Leela. So all these things you should write in the sequence. Like how Krishna took birth in the womb of Mother Yashoda. Then how in the Brajvashi's houses he is stealing the butter and all. How with his friends he is playing. Then, like with the gopis, how he was engaged in rasa dance. All these things you should mention in the sequence. In Srimad Bhagavatam, it is written in sequence because it was instructed by Narad Rishi to Veda Vyas. Not only till here, Dharma, Artha, Kama, Moksha, Krishna Prem. So Dharma, Artha, Kama, Moksha is not the ultimate cause of but Krishna Prem. So please mention about Krishna Prem, Dasya, Sakya, Vatsalya, and you please write the topmost Madhurya Ras also. You establish this Madhurya Ras is the topmost Ras. So the topmost Leela of Krishna is called Ras Leela. So all this Katha please mention. Again in the further the stories are mentioned like Krishna Leela Katha. So all these things have been evidenced in Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam is called Puran Samrat, the king of all the scriptures. गोलोक प्रेम और उस वृंदावन में विशेष करके राधा जी गुरु के प्रेम महत्व जो है श्रवण करा कीर्तन करो उसको लिखो उसमें विरह और मिलन की. So Narad Rishi is instructing like this in several ways that how you should write the topmost gopis prem and write the separation and milan, separation and meeting, all these things. So as per the instructions of Srimad Narad Rishi, Vyasadev wrote all these things. Milan, Viraha, again Milan, Viraha, all these things have been shown in Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is such a precious scripture in which every word has been evidenced. So whatever doubts had, Shukdev Goswami has cleared all the doubts. So in Srimad Bhagavatam it is called Shuka and Parikshit Samvad, conversation. The three conference which held on Srimad Bhagavatam. The first conference was Vyas and Narad conversation on the banks of Saraswati river. This was the first sitting of Srimad Bhagavatam. And second sitting, Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj. This is the second sitting. This happened Ganga Tat Shuktal. This happened on the banks of river Ganga. And third, Sut and Shaunaka. Shaunaka Rishi and Suta Goswami on the banks of Gomati river. The third sitting happened of Srimad Bhagavatam. All these things happened on the all the three conversation sittings happened on the banks of river.
पढ़ने में ज़्यादा है? इसके आगे तो अनेकों कथाएं हैं, किंतु वास्तव ये तीन की श्रीमद् भागवत में सुख क्या बोलते हैं? So in Srimad Bhagavatam, Shuta Goswami and Saunaka Goswami's Shuta Goswami's and Saunaka Rishi's conversation has been mentioned in Srimad Bhagavatam. So Prabhuji was asking about the 6 questions. So these 6 questions were asked by Saunaka Rishis to Shuta Goswami, and all the Srimad Bhagavatam 18 cantos is the answer for these 6 questions. First 5 questions was given in the first canto, and the 6th question was elaborated made by second canto to 18th canto mentioned. What is the first question? First question is, what is the topmost benefit for the conditioned soul? What is the Param Dharma? Vasudeva Krishna, Supreme Lord, why he took birth in the Devaki's womb? Tell about this. Fourth question is also Bhagavan Sri Hari, along with his brother Baldev, what and all the pastimes? Please tell that. And fifth question, the Lord's many different avatars. Please tell us. Like Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, other avatars, all these things. And what was the sixth question? Lord Sri Hari, when he disappeared from this material world, the Kali Yuga started. And this Kali Yuga, in this Kali Yuga, Dharma, with whom it took shelter. So this was the sixth question. देखो इतने सुंदर ये छठा प्रश्न है, आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, उसमें जो है सुत और सनकादि की कथा है। एक उदाहरण चारण सनकादि ऋषिगण अपने अपने जब आदि सहस्र वर्ष की जो ये दिया था, जब आदि करके जब समाप्त जब करके जब बैठे इतने समय बहुत इच्छा से सुत गोस्वामी पाद पधारे और सुत गोस्वामी को देख करके समस्त ऋषि लोग अपने अपने स्थान से उठ करके खड़े हो करके सुत गोस्वामी पाद के जो है सम्मान दे करके पूछे आसन पर बैठाए। मैं नहीं करूँगा, आप करिए सुत गोस्वामी फिर सोनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद के निकट ये 6 प्रश्न पूछा और इन 6 प्रश्न के उत्तर थे सुत गोस्वामी पाद सोनकादि जी के इस कथा सुनाया, जिस कहने लगे ये सोनकादि जी लोग मैंने जैसे जैसे मैंने कथा श्रवण किया इससे सुखदेव गोस्वामी पाद। So this conversation was presented along with Shaunakadi Rishis and Suta Goswami. So Suta Goswami also told, whatever I heard from Shukdev Goswami, I am going to present as it is, whatever I heard. So before presenting the Krishna Katha, he made obeisance, he paid pranams to Shukdev Goswami Pad with 2 shlokas. So Shuta Goswami Pad is glorifying Shukdev Goswami Pad and accepting his in the form of his spiritual master and also glorifying him. जैसे 6 प्रश्न जो मैंने बताया, अच्छे से समझना चाहिए 6 प्रश्न क्या था और ये सारे प्रश्न को उन्होंने एक एक करके उत्तर दिया। और फिर जो कथा जो है आगे 3 प्रश्न जो 5 प्रश्न की उत्तर तो दे दिया प्रथम स्कंद में, किंतु एक ही प्रश्न के उत्तर जब भगवान श्री हरि देवकी और वसुदेव के गृह में जन्म लेने के कारण हमें बताइए और उनकी लीला चरित कथा हमें श्रवण कराइए। और उसकी सारी कथा उन्होंने श्रवण कराया भगवान श्री हरि की और उनके अवतार बलि की कथा भी श्रवण कराया। और फिर भगवान श्री हरि
अंतर्ध्यान हुए तब धर्म किसको शरण में आए। इस कथा में श्रवण करा धर्म किसको शरण में भागवत धर्म। So all these things Maharaj is telling that we should know properly and we should know perfectly. Maybe tomorrow Maharaj may continue on these topics. भगवत प्राप्ति के हम कैसे हो जिससे कहा जाता है उद्धव कृष्ण Samvad. संवाद कहा जाता है इसको। बहुत सुंदर जी कथा द्वादश स्कंध में जाकर के फिर इस कथा में कहा जाता है धर्म कैसे ले लिया। भागवत रूपी सूर्य के आश्रय ग्रहण किया। कलयुग में और कोई नहीं, कलयुग में और बिंदु का अध्ययन करने की जरूरत नहीं। कोई भागवत का ले सार समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? इस श्रीमद् भागवतम। All the essence of Ved, Purana, Shastras is Srimad Bhagavatam. The essence of all the Vedas, Puranas, Upanishads, scriptures is Srimad Bhagavatam. So if you have the taste for Srimad Bhagavatam, then you will not have any taste of any scriptures. So Srimad Bhagavatam is the highest taste. One who has a taste on Srimad Bhagavatam, they will not have taste for any other scriptures. All these things have been showed here. Srimad Bhagavatam. इसलिए श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंध की आठ संख्या निगम का पूर्ण गलित धर्म सुखा धर्म धर्म संयुत पीपल भागवत और समारोह मुहुर हो ऋषिका कितनी सुंदर कथा है वर्णन करते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत की प्रतिपाद्य विषय करते जा रहे हैं। So this is the Srimad Bhagavatam's Pratipadya Vishay. Pratipadya means the summarized meaning of Srimad Bhagavatam presented. And Srimad Bhagavatam's Vatsav, the present thing is Radha Prem. भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और भगवान का अत्यंत निकटतम उद्धव से लेकर के मही से माने कृष्ण के 16,108 पाठरणी श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध में 1990 अध्याय दसम स्कंद कितना अध्याय 90। In the 10th canto, 90th chapter, it is also mentioned that how all the queens of Krishna hear the glories of Srimati Radharani and they also had a desire to have the Radha Prem. Hare Krishna.